Good evening, Namaskaram, and welcome back to Gana Shot. आज हम एक अपडेट लेंगे. I'll give you an update on what's happening in Pakistan. Not that you don't know, but we'll go over various issues. And today we'll do this show with a difference. I'll not do the analysis. I want your opinion on the whole story. Opinion. Don't give me questions. We'll discuss your opinion. We'll flash your opinions, and then we'll take it forward because I think we need more audience interaction. Okay. 24 hours is a long time in Pakistan. पाकिस्तान में 24 घंटे बहुत एक अरसा होता है और बहुत कुछ हो गया है जिसके बारे में हम देखेंगे, राइट? और ये अपडेट में पर सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट जो पाकिस्तान के बारे में ये है कि इनका रुपी जो है इट्स गोना हिट अ ट्रिपल सेंचुरी. Just at the end of the day, it just tanked. It was at 288. 288 से फट गिर गया 298 तक. So you know, this tells you what's going to happen in Pakistan or what's happening in Pakistan. ठीक है ना? It's the barometer. Okay, let's start with the thing. The most sensational thing शाम को आया था 5:30 बजे के 6:30 बजे के बाद करीब, जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का जो अरेस्ट है उसको अनलॉफुल घोषित किया और उनको बताया कि ही शुड अपीयर बिफोर द कोर्ट टुमारो. वेल, दिस इज एवॉल्विंग स्टोरी. देखते हैं कहाँ होगा, क्या होगा. बट दिस इज वन ऑफ द 3 ऑप्शंस व्हिच वी गेव यस्टरडे कि या इसको मार दिया जाएगा, इसको या he will be kept indefinitely in prison or he'll go walk scot free or he'll be let to go scot free. That's happening, but it's not yet fully happened. We don't know whether it's going to happen or not. It's just that the Supreme Court has given an order. Whether the government has already said we don't agree with that order. Whether the government will carry out that order or not is to be seen. Okay. So that if they don't, it will go into a different angle. Okay, we'll see that. But most importantly, we need to see what are the actors today, how they are aligned in Pakistan. I want to put it in frame. This is no analysis, this is plain facts. Let's go closer and have a look. On one side is the army, very clearly, the PDM, the election commission, which is totally under the thumb of the PDM, and China. Why China? Because just 2 days before this entire story, the Chinese foreign minister came, gave a message and went off to Afghanistan or wherever he went. Very clearly, China is playing a hand here. Not that USA is not playing, but the hand of China is very apparent to my way of looking. Someone might have a different view. On the other side is the PTI, of course, complete Imran Khan and his PTI. And then the president. Don't forget that the president is Imran's backer. And the majority of the people, as it appears, seem to be behind Imran Khan. Now the judiciary is in between. ठीक है, पर बात यह है कि अगर आप ये पूरा व्याख्या देखेंगे तो the judiciary seems to be acting for the first time in its own right. Okay? It's upholding some sense of law. Even when it said that the election should be gone through as per schedule, as per the constitution. Even now, when the moot point was that how can you arrest a person who is in the court? Because if once a person is in the court, he's deemed to be already in the custody of the court. Yeah, whatever. Right, they're playing. But there is also a thing that the government and the army are not happy with it. There's no doubt about it. Okay. Before I come to the bottom block, let me tell you, जब भी ये इतिहास है पाकिस्तान में जब भी आर्मी का तो हाथ तो होता ही ऊपर, बट आर्मी को अपना सत्ता चलाने के लिए
either directly or indirectly, हर वक्त जुडिशरी का साथ था. Whether it was, you know, Ziaul Haq or Pervez Musharraf, the judiciary was with them, with the army. For the first time, you're seeing the judiciary is against the army. Remember, the last time when the judiciary was against the army was when the judges and the lawyers went against Pervez Musharraf and they threw him out. Well, but then the judiciary itself is split, so it's an interesting phenomenon in its own right. But then, sorry, ये जो लास्ट ब्लॉक है बड़ा दिलचस्प ब्लॉक है. ये उड़ रहा है, ये सोशल मीडिया में राउंड्स हो रहा है. 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स आर ओपनली अगेंस्ट असीम मुनीर एंड पीडीएम. उनका नाम भी दिया गया है. So there's a split. And there are also stories on the social media that 3 corps commanders refused to take any action. So this is how the cards are stacked in Pakistan. Okay, there's also ये उड़ती खबर है कि Pakistan army will try to attack Kashmir or Pak-India border to divert the attention of the Pakistani people, and things are getting out of hand. ये सुबह जा रहा था, right? अच्छा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने he addressed the station. He, of course, is an unelected prime minister. He's a super selected prime minister. He's warned Imran Khan supporters to immediately stop riots and anti-state activities. He's referred to former PM Imran Khan supporters as terrorist. इसका मतलब आधा पाकिस्तान या एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का उसको बोल दिया कि भाई तुम टेररिस्ट हो. तो ये क्या प्राइम मिनिस्टर, आप खुद देख लीजिए. ओके, आर्मी में ने भी एक अफवाह उड़ाया कि भाई इमरान खान का खेल खत्म है. ठीक है, और सबके रिकॉर्डिंग हो रहा है, फोन टैपिंग हो रहा है, सब कुछ. पर बात यह है कि आर्मी का 6-7-8 लाख हो सकता है फौज, यानी कि पैरामिलिट्री और नॉर्मल मिला के. बट अवाम तो बहुत बड़ा है पाकिस्तान का, राइट? तो ये भी चल रहा है, तो ये भी इट्स कम इनटू फोकस. न्यूयॉर्क टाइम्स का जो टिप्पणी है उसमें बोल रहे हैं Khan has supported deep support in the military's own ranks. This is a New York Times report of yesterday. So, escalating the crackdown could cause a rift that further destabilizes an institution facing one of its most serious crises. Okay, they also say Munir is under pressure from the military's networks, perhaps some senior generals to back off and take an off-ramp and reconcile. So army is on the back foot. It's hard to see how the situation de-escalates, right? Khan's popular support has protected him against the establishment's assertiveness till now. But the establishment has asserted itself. It's hard to see it backing down anytime soon. Volatile, dangerous times ahead for Pakistan. So that's also on the card. Now Dawn says, right, public anger is directed at the military. Nature of protest, everything, सब कुछ military के against है. Okay, people were angry enough to cross red lines. No one dared to cross before. आज तक मैं कल भी ये बताया. Now I'm saying ये जो भी बोल रहा हूँ, मेरा एक आदत है कि दूसरा साइड क्या सोचता है वो मैं परखता हूँ. Look on the other side of the hill. One more thing, removing Khan from the picture solves nothing. Very correct. That's what me and General Satish Doha had spoken. Right? Arresting him may have deeply fractured the historic compact between the people and the country's armed forces. This is important. If this compact is broken, Pakistan is in trouble. Okay? No matter how strongly the current leadership wants the public to forget its role in political engineering, it cannot simply wish away perceptions that have solidified over months and years. So this
editorial is all about how army is in hot water. Okay? Now that the state has Imran Khan in custody, what is the next plan? कल भी हमने बात किया था कि भाई ये प्लान के मुताबिक चल रहे हैं कि अभी अगला प्लान क्या होगा जब उन्होंने रिहा कर दिया इसको, राइट? इसका जो बेस है वो तो पीटीआई तो बड़ा नाराज है, सपोर्टर्स। इनको कैसे मॉडिफाई करें, इनको कैसे चुप कराएं? और खैबर पख्तनवा में भी प्रॉब्लम हो रहा है। The arrest seems to have reinforced the perception that yet another civilian government has joined hands with unelected powers to take out a popular political leader simply because they threaten their individual interests. This is a situation, ये जो स्थिति है पाकिस्तान के अंदर, ये कभी ना हुआ। अब सबको एक आइडिया है कि ये जो फौज है और ये जो जितने राजनीतिक एक्टर्स हैं वो अपना जेब गर्म कर रहे हैं और हमें बुका मार रहे हैं। जब एक जनता में ये नौबत आ जाती है तो इलेक्शन जीतना मुश्किल है। इसका पैरेलल जो है वो हमारा जो 1977 में जब उस वक्त का कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी को हटाया गया और जनता पार्टी आई। क्यों? जनता में ये बैठ गया कि बदलाव चाहिए। ये बदलाव आई थिंक पाकिस्तान का अवाम ढूंढ रहा है और मिल नहीं रहा। ओके, एक और ऑपेड है, ओपिनियन, एक पुराना इनका एम्बेसडर ने लिखा, whom can the public turn to for relief from the current idiocy? ये बेवकूफी से कहां जाएंगे और कहां जाएंगे ये अवाम? एक निराशा है देश के अंदर। ओके, ये भी देखा है कि भाई एक और बार एक पॉलिटिकल लीडर को ये दे हैव, ये ट्रिब्यून का है, being manhandled. Backlash has been fierce. Images are being circulated on social media of attacks on GHQ and the house of Lahore Corps Commander Flames. Both appeared unguarded. अबे कभी ऐसा हो सकता है कि GHQ में गाड़ी ना हो? क्या ये भाग गए या दिस वाज स्टेज मैनेज्ड? क्या ये भीड़ के सामने ये छोड़ दिया? क्या ये मिल गए भीड़ के साथ? You look at it from any point of view, question marks. Again, Don says, a lot of people have been arrested. All PTI leaders have been arrested. We know it. Okay. Imran Khan might have come out, but all the PTI leaders are still in. Okay. Right. और तो और जो इनका गिलगित बाल्टिस्तान का जो सीएम है उसको भी अरेस्ट, आई बिलीव हाउस अरेस्ट में है। Elected CM, and that elections were held just about a year or two back, if I remember. An elected CM of a province, or rather intended province, right, is been put under house arrest. There's something fundamentally wrong. Okay. Right, of course, this we know the three-member bench to hear. That bench has heard. They made Imran Khan appear in the court within an hour or so. They came and they pronounced their result. Now, Audi, I mean, people say that, look, this whole story can fizzle out. But the damage has been extensive. If you, अगर आप सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह में जो घूम रहा है मैसेजेस, अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक नुकसान हुआ है। ऑडी का शोरूम जल गया, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है। पर तो एक तो ऑडी है, बाकी क्या होगा, बाकी क्या हुआ होगा, ये कवर बाहर नहीं निकल रहा है, निकलेगा। ठीक है, कोई चिपता नहीं है, राइट। मोबाइल इंटरनेट तो बंद है, वो सब वो ठीक है, यूट्यूब शूट्यूब सब बंद है, तो अभी ओके।
आर्मी का जो स्टेटमेंट है वो इंटरेस्टिंग है. उन्होंने बोला कि May 9 इज अ ब्लैक डे. ओके, एंड दे आर जस्टिफाइंग नाउ, saying the army has showed patience and restraint and exercised extreme tolerance and not even caring about its reputation in the larger interest of the country. The army's mature response has thwarted this conspiracy. We are well aware that behind it were orders, directives, and complete pre planning by some sinister party leadership. So they have now jumped into the fray openly. So far, if you thought they were doing, पीछे से खेल खेल रहे हैं, अभी तो सामने आ गए हैं. अभी एक खेल जो है इमरान खान और आर्मी के बीच में सीधा, जो भी होगा आज, ये पीडीएम वगैरह साइड एक्टर्स बन जाएंगे. दे विल बी द टूल्स ऑफ द आर्मी. ओके, this is interesting. I'll read it in detail. Is a direct military takeover likely in Pakistan? ये Friday Times में this is a uh, analysis. What does it say? He says a military commander would not like to preside over an economic meltdown. Naturally, but is he being forced to? The way things are going, it would be better that the winner in the next elections take the blame for a possible default on Pakistan's financial commitments. इसका मतलब इलेक्शन कराओ, कोई भी जीते, और मोस्ट प्रॉब्ली यही जीतेगा. अगर ये इमरान खान जीतेगा तो द ब्लेम विल कम ऑन हिम और आर्मी पीछे. बट ये जो कहानी है ये उल्टा होने वाला है, या उल्टा होने का इसमें पड़ा है. The military commander would not find any international mentor which would be ready to foot the financial bill for his adventure. और ये आर्टिकल में ये एनालाइज किया है कि परवेज मुशर्रफ और जियाउल हक जब इन्होंने टेक ओवर किया, इनको पैसा दिया गया बाय अमेरिका एंड गल्फ एंड हुएवर टू डू देयर बिडिंग. पाकिस्तान को बोलते हैं रेंटियर स्टेट. उन्होंने अपना बेच दिया, जो भी ईमान, जमीर, सब कुछ, पर उसके लिए पैसा मिला. आज के दिन अगर ये डिक्टेटर बनने चला तो कोई इसको पैसा नहीं देगा. चाइना वाला तो पैसा एंटेगा इनसे, ये तो हमें पता है, राइट? द बेस्ट बेट फॉर आवर मिलिट्री टॉप ब्रास विल बी टू फैसिलिटेट द होल्डिंग ऑफ फ्रेश parliamentary elections and make sure that power is handed over to the winner. Doesn't matter who wins. Pakistan cannot afford any kind of civil strife. वो तो वही चल रहा है. Any confrontation between the military and political forces, right, would not only be suicidal, it would lead to complete collapse. और उसी रास्ते पे चल रहे हैं. The military commander should make sure that there is no confrontation between military and popular political forces. Very sensible. But आपने देख लिया कि मिलिट्री का क्या, आर्मी का क्या स्टेटमेंट है और किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं. The way things are going, yesterday we had discussed, it could be an emergency, it could be extended emergency with the military control or the military takeover. Any one of these options are still open. पाकिस्तान में अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है भाई. ये कोई नया चीज नहीं है पाकिस्तान में. ये मत सोचना कि क्योंकि कोर्ट ने हुक्म दे दिया इसको रिहा करने के लिए, या उसका अरेस्ट अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया कि ये पिक्चर खत्म हो गया. अभी तो शुरू हुआ है. ओके, राइट. Again, whether the PTI faces a ban or change in leadership, the Kakis have run their course. Army का उसका खेल खत्म हो गया, right? From seeing the DGISI speak to the media in a car
crash of a press conference, मतलब जल्दीबाजी में इन्होंने press conference कर दिया, to the military's chain of command weakening, to seeing the corps commander's residence get attacked and vandalized, it is apparent that the establishment is at its weakest. यही मैं कल भी बता रहा था काफी दिन से. I've never seen, आज तक मैंने ये हालत नहीं देखा पाकिस्तान के अंदर. ओके, राइट, ओके. यहां मैंने जो बोलना था बोल दिया. अभी मैं आपका ओपिनियन चाहता हूं, राइट. डोंट, आप थोड़ा लंबा चौड़ा लिखिए. मैं पहले ऊपर से शुरू करता हूं, 2-4 हम बात करेंगे. दिस इज an interactive session. This is new. I will not answer questions fully, right? We'll leave it क्योंकि ये developing situation है, right? Yeah, before as you type your questions, I have a lot of time. 40 मिनट है आप लोगों के लिए बात करने के लिए, lot of time. I'm going to change tracks now. First and foremost, I'd request all of you to tell your friends to, join Gunner Shot. Welcome to Gunner Shot, and if you like what I'm doing, please press that bell icon and all that nonsense, so that more people come here. The more people come, the better it is for all of us. Okay. Second, I'm going to change the format of normal this thing. Hereafter, I'm not going to have guests on my show. We're going to have friends. I'm going to have my friends. मेरा दोस्त आएंगे और उनके साथ मैं बातचीत करना चाहूँगा. तो आप, कई लोग लिखते हैं कमेंट में, अरे उनको बोलने दीजिए, गेस्ट बुलाए हो उसके ऊपर क्यों. नहीं, ऐसी बात नहीं है. हम सब दोस्त हैं, एक दूसरे बहुत दिन से मैं पहचानते हैं हम एक दूसरे को. हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ और उस बातचीत में आपको पता चलेगा क्या है. तो ये जो फॉर्मेट है मैं बदलता रहूंगा. आपको देखना पड़ेगा किस फॉर्मेट में अपना रहा हूं. ओके, राइट. पिछले कुछ दिन में काफी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं. वो वेलकम, थैंक यू. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. पर मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आपको इससे बढ़िया चैनल नहीं मिलेगा इंडिया में जहां तक इंडियन डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इश्यूज आर कंसर्न. आपको शायद ही कोई चैनल मिलेगा जहां आर्मी कमांडर्स, कोर कमांडर्स और डीजीएम और उच्च अधिकारी आएंगे, कि कहीं नहीं मिलेंगे आपको, राइट. आप वो जाएंगे बाकी चैनल्स में, और वो वहाँ इंटरव्यू होगा. यहाँ जिस तरीके से हम चलाएंगे वो ऐसा नहीं होगा. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट. और लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू गोइंग टू व्हिच आई कन्वे टू यू is a matter of personal interaction with me and the others. So इसीलिए गनर शॉट अलग चैनल है. आपको फायदा तभी होगा जब आप इसका व्यूअरशिप बढ़ाएंगे. तो ओके, नाउ लेट मी टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉप एंड योर ओपिनियंस फ्रॉम द टॉप, क्योंकि ये आज के दिन आपके दिन है, ओपन हाउस है ये. ओके, Bisibali Bad says martial law in Pakistan is equal to Burma. Well, that's our opinion. We will not go to that. John Doe says no martial law, as government and army are on the same page. Only opposition party is causing unrest. Fact. अभी तक मार्शल लॉ डिक्लेयर करने का नौबत नहीं है. बट वी डोंट नो किस तरीके से ये चलेगा. अगर कल के दिन ये इसको रिहा ना किया जाए और अगर हिंसा बढ़ गया वगैरह, फिर देखते हैं क्या होगा. ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फाइटिंग. वेल, उन्होंने ये दिया, देखते हैं क्या होगा. So this disturbance will create viciously anti-establishment group in the Paki heartland. They can even work as fifth column. Indian intelligence and agency will group them. Possible.
fully possible, right? And I go with you. But the interesting point is an anti-establishment group is now forming. It is more. बट एक और चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कल राजीव नारायणन, जनरल राजीव नारायणन बोल रहे थे कि जो पीटी हाई, अगर उनका टॉप लीडरशिप निकाल दो तो नीचे उनका ऑर्गेनाइजेशन वीक है, राइट? इट देयर इज अ चांस दैट ऑल दिस प्रोटेस्ट कुड फिजल आउट, बट वी डोंट नो. ओके, John Doe says IKA will get bail on some pretext, but his followers will not in jail. Possible. Let us see how things. अभी वो है ना बोला, अभी ट्रेलर चल रहा है भाई, पिक्चर का बाकी है. ओके, सुमित गाडगे, वेलकम, लॉन्ग टाइम. If civil war started, will Bharat be able to stop millions of refugees at the border? How much refugees Bharat can take? There'll be no refugees. I mean, ये मैं बार बार बताता आता हूँ, हमारे पास एक इलेक्ट्रिफाइड फेंस है, उसको पार करना आसान नहीं होगा. और जो रेफ्यूजीज आएंगे वो थ्रू द डेजर्ट नहीं आएंगे, वो पंजाब के साइड ज्यादा आएंगे, नीचे गुजरात के साइड आएंगे. इनको रोक सकते हैं और उन्हीं के इलाके में ऑन द बॉर्डर आप इनको कैंप वगैरह लगा के हेल्प कर सकते हो. तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बार बार लोग बोलते हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा. और देखते हैं कितने आएंगे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान का आवाम जो है वो बिल्कुल एंटी इंडिया है. General, good evening. My view is Pakistan is a done case. Yeah. The army, last bastion keeping the country together, is being challenged. I agree. It is for us to watch it, how it crumbles, if it will. That's when Pak balkanizes. Possible. All options are on the table. ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, ये आज का कहानी है, राइट? जैसे मैंने बोला, आपका ओपिनियन इधर जाहिर कीजिए, मैं दिखाऊंगा आराम से, आज बहुत टाइम है. ओके, जय हिंद सर. वन पोएम डेडिकेटेड टू पाकिस्तान. एक धक्का और दो, पाकिस्तान को तोड़ दो. ठीक है, ठीक है स्वरूप भाई, टेक इट. अच्छी बात है, राइट? I hope you people are typing in more of your questions. We have time, we'll go through all your opinions so that you know your opinion with each other. In my opinion, given the amount of current crisis, Pakistan find it even more difficult to get money from the IMF and other lenders in the next couple. If finances don't improve, Pak may freeze accounts or assets. Possible. Especially because आज देखिए इनका जो मुद्रास्फीति है गिर गया वो, right? The Pakistan rupee has dropped, tanked 10 rupees against the dollar. So what you're saying is is fully on the cards, Anshuman. John Doe says the ideal situation is judicial coup on IK, as was done on Nawaz, legally barred from running. But if the judiciary won't play ball, then the option is not available. ये तो साफ नजर आ रहा है. कोई लोअर कोर्ट उसको बैन कर देगा, ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा. और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर है, आज उसने क्लियर संकेत दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू प्ले इट्स ओन बॉल, विच इज गुड फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान ये जो टर्मोइल है ना, इट इज गुड. यही बात मैंने और जनरल दुआ साहब ने बात किया रिटर्न ऑफ द इमरान खान में, कि भाई ये कुछ टर्मोइल चलेगा और ये टर्मोइल के बाद 10-15 साल के बाद ये बाहर निकलेंगे, इट विल कम आउट अ बेटर नेशन. But it will be a bitter pill till then. On that, don't have any doubts. Okay. This could lead to a bank run with its radical and stressed population, and access to weapons and terror groups can lead to a full-blown civil war. That will prove to be advantage USA because they, I don't know, whatever you've written. See, Anshuman, the point is, all this what you're saying हो सकता है. ये जो सिविल वॉर सब बोलते रहते हैं, some kind of a civil war is still on. Yesterday, like I told you, I was जब मैं डीडी शो में था, वहां भी एक आदमी पाकिस्तान का है, उसने वो बोल रहा है कि सिविल वॉर ही चल रहा है, आइडियोलॉजिकल सिविल वॉर. बट माय व्यू इज दैट सिविल वॉर होने के लिए ना, देयर हैज टू बी एंड रीजन. व्हाट इज द सिविल वॉर ऑल अबाउट? Is it strife, unrest, or civil war? Civil war is between two opposing factions, right? For a purpose. Strife, unrest,
political fight is different. Now each one is trying to grab the country. No, there is something else going on in Pakistan. It's not civil war. It is absolute. It's going towards anarchy. So this is a different kind of a story which is happening. अगर आपको याद है, मैं जनरल गौतम मूर्ति के साथ जो वीडियो किया था कि भाई पाकिस्तान आर्मी में अगर दरार पड़ गया और वो फूट टूट गया तो ये पाकिस्तान का खेल खत्म हो जा सकता है. वो नौबत आएगा कि नहीं, देखने वाली बात है. Right? Will weaponize Pakistan against China by making it an economic sink or pushing China out by adding Pakistan military directory. All in all, Pak military will retain power but in a weakened form. देखते हैं. You've spoken too many things, Anshuman. Okay, please take POK back and liberate Baluch and Sindh. Patel, J Patel. भाई इतना आसान नहीं है. ये इसके लिए टाइम है. आप पीओके को टेक बैक करने के लिए ना बहुत प्लान चाहिए. आप हमारे पास वो प्लान नहीं है आजकल. लेट्स बी वेरी फ्रैंक. सब बोलते रहते हैं जोश में पीओके टेक कर लो. उतना आसान नहीं है. अगर पाकिस्तान टूट रहा है फिर वी कैन थिंक. बट बात यह है कि द मोमेंट यू मेक अ मूव अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन दिस लाइंस, आप देखोगे कि पाकिस्तान विल टर्न टर्टल. ओके, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आज के दिन, मैं पहले दिन से बता के आ रहा हूं, पाकिस्तान को अपने आप टूटने दो. जब टूट जाएगा बिल्कुल, फिर जाके अपना मूव करो. तब तक या ओ कमलेश, ये तो पिछले कुछ दिन देर की बात है, 1 घंटे की बात है. राइट? सो ट्रिपल सेंचुरी हो गया इनका. और ये ऑफिशियल रेट है. अनऑफिशियल में ये चला गया होगा अभी तक 320 तक. ओके, इमरान खान हैज बीन रिलीज. देखते हैं. आई डोंट नो इफ ही हैज बीन रिलीज. कोर्ट हैज ऑर्डर्ड रिलीज. वी डोंट नो वेदर इट्स बीन डन और नॉट. राइट. For 70 odd years, Pakistan was supported financially by USA and Middle East. With free funding drying up, how do you expect them to sustain in years ahead with a disenchanted right? Yeah, they can't sustain. देखिए, ये जो भी पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, ये पॉलिटिकल ड्रामा होने के बाद इकोनॉमिक ड्रामा आने वाला है, और वो है इंटरवल के बाद. राइट? ये फर्स्ट हाफ चल रहा है इस खेल का. सेकेंड हाफ में वो पैसा, इनका फूड सिक्योरिटी, पॉपुलेशन सिक्योरिटी, बाकी सब सोशल स्ट्राइफ आएगा. सो देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस स्टोरी. राइट? देयर इज अ लॉन्ग वे अप. ओके, इमरान हैज लॉस्ट, आर्मी हैज लॉस्ट एंड इमरान हैज वन. नॉट सो फास्ट संकित. संयम रखो. धीरे. अभी एक मोड है कि भाई, again, like I said, will the government accept the CJP's verdict? We'll have to see. Emergency is still a possibility, if only from a law and government point of view. I agree with you, John. There's no doubt. Supreme Court released Imran Khan. Never would have thought Pak army will lose so much power inside Pakistan. I think we are seeing something very different here. All possibilities are on the cards. I agree with you, Ame. आज अभी तक यू कैन नॉट गारंटी एनीथिंग. कुछ भी आप बोल नहीं सकते हो. एक चीज है इसमें जो हुआ है, वो चाइना को धक्का लगेगा. चाइना विल हैव टू थिंक वेरी हार्ड हाउ दे आर गोइंग टू डील विद पाकिस्तान. ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड. इफ इलेक्शंस आर्मी हैपेंस, आर्मी विल लूज फॉरएवर. फ्री इमरान विल डेफिनेटली विन. Army will either implicate him in something again to disqualify, or he'll be, ये problem, ये तो है. अभी तक सारे ऑप्शंस खुले हैं. ठीक. ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये जो चाइना सीरीज है, आई हैव पोस्टपोन्ड चाइना सीरीज समवॉट. टुमारो, instead of talking of Xi Jinping, Deng Xiaoping and Mao with General Dushyant, we are going to discuss Pakistan. And format तो अलग होगा. He has told me he'll ask me questions and I'll have to answer. So, right, there's going to be a swap between the two of us. That's okay.
And day after tomorrow, I'm going to get General KJ Singh over, who spoke so well about CPEC. On Sunday, we'll ask General KJ Singh to discuss about Pakistan. He's done a lot of research on Pakistan, and he knows Pakistan very well. And after all, he commanded the army, Western Army. He was a GOC Western Army, so he knows Pakistan backwards. So we'll hear him. Next 2 days are interesting talks. After that, we'll see where it goes. I'll get more people to talk. Okay. It feels software updated Imran Khan release. We don't know. No software is virus free. Tarun, and Pakistani software cannot be trusted. Okay. Is Pakistan army losing power? I don't think so. They're tactically withdrawing where experienced, letting the people went. Possibly even staging some of these incidents is all par. It's all par for the course, John. The only problem is just put yourself in the shoe of a Pakistani. आप सोचो आप अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपका आपके ऊपर क्या गुजर रहा होगा. आप बाहर नहीं जा सकते हो. आपका पाक क्या आपका पासपोर्ट देके थूक रहे होंगे, राइट. आपको जॉब नहीं मिलता, आपको नीचे देखा जाएगा. अगर आप गल्फ और सऊदी अरेबिया में आज के दिन आप जाओगे तो ये तो आप तो लेबर क्लास है, ये यही माना जाता है. ठीक है ना. तो इनका जो सबका नजर इनके ऊपर नीचे देखने वाली बात है. तो सेल्फ एस्टीम की बात है. और मेरे ख्याल में एक आम पाकिस्तानी उस मोड पे आ गया जहां ये खेल से वो परे हो गया अभी. हाँ, वो एंटी इंडिया रहेगा जरूर, पर मेरे ख्याल में दे आर इन अ बैड शेप. दे हैव टू चेंज कोर्स, नहीं तो पीपल विल स्टार्ट डाइंग सून. ओके, विजय कुमार एग्रीज. थैंक यू विजय. नीरज, now Imran is a liability to the army. Somehow he has to be disqualified, or army has always inked some deal with army for a win. Look, देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए अगर आप पीछे देखेंगे, डिस्क्वालीफाई करने के लिए जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या परवेज मुशर्रफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और एक्सेल में भेज दिया था, कोर्ट का ऑर्डर था. यहां कोर्ट का ऑर्डर उल्टा हो रहा है. लोअर कोर्ट कुछ दे रहा है, हायर कोर्ट उसको बंद कर रहा है. और जैसे मैंने बोला वो जो पहले जो let me show that figure that has got lot of value, right? That's got a lot of value. I'll show you that figure. 1 minute. Yeah, it's come. ये देखिए, जुडिशरी के बिना ये कहानी चलेगा नहीं आगे. और जुडिशरी इज नॉट प्लेइंग बॉल. अगर जुडिशरी बॉल नहीं प्ले करेगा तो इट्स डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू गेट थ्रू. और एक और चीज, इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अटा बांडियाल, इसने एक बड़ा संकेत दिया आज. और क्या संकेत दिया? उसने इमरान खान को जब कोर्ट में आया था उसने बोला कि इट्स गुड टू सी यू. ये बड़ा संकेत है. He was not happy to see, or there's no personal happiness. What he was saying is कि भैया तुम जिंदा हो, अच्छी बात है. और उसने एक हुक्म दे दिया कि भाई आप जा सकते हो, कल आप कोर्ट में जाके हाजिर हो जाओ, चलता रहेगा वर्डिक्ट ये वो. तो उसको इमरान खान को रास्ता दे दिया वापस सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए. ये केस जारी रहेगा, कोई भी केस. जितना दिन हमारे यहाँ केस होता वहां भी होगा. डिस्क्वालीफाई कहां से होगा इतना आसानी से? It's not possible now. That option of disqualifying Imran Khan seems to be going away.
आप उसको एक्सेल वेक्सेल उतना आसानी से नहीं बेच सकते। हाँ, यू कैन किल हिम, एक्सीडेंट करा दो, उसको कुछ गोली मार दो, पॉइजन दे दो, कुछ भी दे दो, बट there'll be repercussions, international repercussions. What today the chief justice has done to Pakistan, he has conveyed to the world that I will go by the rule of the law, and he has said so that the rule of the law should prevail. Somewhere I read that. Enough. So how can Pakistan army just do what it wants? If that happens and the international community tanks up or tightens the purse strings, which will happen, the army is on the drawstring then. Well, actually, the situation is quite tight. Anything can happen in Pakistan, but all roads lead to Rome, and that Rome for Pakistan is destruction. It doesn't matter if Imran Khan comes into power. It doesn't matter if the army takes over, or it doesn't matter if Shahbaz Sharif continues. All three are a dead end for Pakistan as far as I'm concerned. Okay? Right. Next question is, Swaroop Sethi, he says, Sir, certainly Imran Khan is not acceptable to China, USA with his previous policy. What is the opportunity and threat if Pakistan actually elects Imran Khan as PM? Is Taliban Khan create terrorism? I don't think he has the time to create terrorism in J&K. He will have his hands full to resuscitate the economy. He has to mend fences with China and USA. So there's a long way to go in this story. Okay, right? I think someone has, Vamred has asked a question. Hello, sir. Do you see Pak Corps commanders taking over each province as they are addicted to power and wealth? Your opinion on Pak army professionalism? See, Pak army is pretty professional when it comes to military. But when it comes to the politics, they're different. Okay. I don't see the corps commanders taking over each province. They don't, no corps commander has that power. To take over a province and declare it this thing, you need political power because that's a political thing. And so far, that has not come out. What has come out is the likelihood of a coup, or rather, push against the army, where probably this chap will be told, Munir will be told, Aap jao, or something like that. But not taking over a province and things like that. So that I don't see happening, Vamred. Right. Okay. So we go back. Next is Rohit. I feel the army will use Imran's release as a catalyst to cool down the public, then will then select an appropriate time and arrest him. What's the use of arresting him again? Either you need to have a game plan. At this point of time, the army has been given a shut up call. Okay, let's see how it goes. I said this is a tactical thing which has happened today, so don't read too much into it. In fact, it has complicated the whole story further. Imran victory will open up deep cracks in the army. I agree with you. There may be factions opposing each other or a coup too from other generals. Munir has lost. No one has lost in this so far. Munir might throw all those chaps out. Remember, the Pak army plus the PDM is a formidable force still. It's very fluid. But I agree with you that there's a long, अगर आपको याद है, पिछले महीने मैंने जब ये सीरीज किया था पाकिस्तान के ऊपर, मेरे को काफी रिएक्शंस मिले वहां से. उससे पहले भी मैंने जब when I wrote in Gunner Shot, I got reactions from Pakistan veterans, and all of them have said कि if Imran Khan comes democratically, give him a chance. And in fact, एक वेटरन ने मेरे को लिखा कि भाई आपने जो बोल दिया,
पर मेरा राय ये है कि भाई उसको चांस दिया जाना चाहिए। अगला चीफ जो भी आएगा उसको मैं बोलूंगा कि भाई पॉलिटिक्स में मिडिल मत करो। एंड ही वाज क्वाइट एन इन्फ्लुएंशियल सीनियर वेटरन। और ये जाके ये आर्मी ने बिल्कुल उल्टा किया है। दे emerged as the main contender of political power. So there is a problem. Okay. Vijay Kumar, sir, I don't want to ask. Everything is already discussed. Oh no, Vijay, you still have a mind. Ask and give your opinion. What's wrong with it? I fully agree. The quality of content of Gunnershot opens new avenues in our minds. Thank you. Yeah, welcome. Look, once in a while, once in a month, 15 days, I'm going to do this. We're going to have an open house on a theme. Up, how? Give your views, and I'll listen to it, and we'll discuss it. Okay. In all conflicts with Pakistan, there is no precedence of refugees coming from the West. I agree. It's a fact. Refugees will go to Europe or some Muslim country. तरुण ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। डॉक्टर तपोमय देव, वेलकम। आप पहले बार इस शो में आ रहे हो। आर्मी विल इवेंचुअली सरेंडर टू पब्लिक ओपिनियन, लेट अस सी क्या होगा। बिगेस्ट फियर इन फ्रंट ऑफ अस will be when China tries to occupy their land against the loan recovery. देखिए चाइना का बड़ा दूर है अभी ये पूरा कहानी में। इट्स नॉट सो इजी। चाइना खुद स्ट्रगलिंग। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। आज एक निकी एशिया में एक खबर निकला है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओ व्हाई इज इट इंटरेस्टिंग इज टुडे देयर आर लॉट ऑफ articles in the Chinese internet, WeChat, Weibo, जहां भी है, which suggest that China will not go to war with Taiwan to reunite it, because it has to have face 4 fronts. They are slowly backtracking from their own stories, and China is in real problems, believe you me. We think that's why ये चाइना का पूरा सिलसिला मैंने शुरू किया। अंडरस्टैंडिंग चाइना इज इंपॉर्टेंट। चाइना डजंट हैव whole lot of money or whatever. They don't have. They are in deep problems, believe you me. That is why my series on China, so that you understand that yeah, this fellow is half your size. बात गेस्ट को करने दो। तपाई में बेद बीच में बोलने से इज नॉट अ, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम नॉट अ जेंटलमैन, आई एम एन आर्मी चैप। या एंड the other guy is also army guy. We know how to handle each other. Point of view is that Pakistan is in civil war since 1947, like Sunni Shia, Punjabi West, ethnic lines, Barelvi, Deobandi, etc. Army is also divided, yet not ready to lose power like Catch 22. We need popcorn. Yeah, I think so. Okay. Rohit Kulkarni, has the Pak army arm twisted the Supreme Court to release Imran Khan? No, no, Rohit. No way. Okay. India must sit tight and wait for things to happen. I agree with you completely. Sir, China backing the #1 army calls it defender of stability. Also, how jihadist influence on Pakistan army will pay colonel's reward. Yeah, we'll talk about this. I'm sure in the course of the next few days we'll talk about this. JP, root of Imran Khan issue is Pashtun versus Punjabi fight in Pakistan. It is there. IK represents Pashtun rule over Punjab. I don't think so. The symbolic new Abdali for Pashtuns. KPK, IK will hit wall with Punjabi establishment. I don't know, because the maximum turmoil is still in Punjab. And Imran Khan stays in Lahore. Remember that. Balkanization of Pakistan may be some distance and actions away, but it certainly, and if yes, then what form of balkanized Pakistan is in India's interest?
It doesn't matter which is in our interest. If it gets balkanized, the only thing which we need to do is take over Pakistan POK without a struggle. We will be able to, but I don't think we should touch anything else. Just it doesn't matter what it is. Whichever way you look at it, it's a problem for us. The people of Gilgit Baltistan don't need a visa to enter China. An entry visa is enough. Given the possibility of a spillover of terrorism to Xinjiang, why hasn't China changed this policy? Abhi tak, they are also wait and watch. The problem has not reached there. Uh, why do you think this Kin gang, their foreign minister, went to meet Taliban? Again, please go back to that video I did with General KJ Singh on CPEC. You see how the whole story will play. I'll talk to him about it day after tomorrow when he comes. We'll talk about this. Any action from India will unite Pakistan. Let them go their own way. I agree with you. What do you think Munir made a mistake that he directly took on IK by arresting in broad light in front of cameras instead of taking care of him like they did to Benazir? Benazir. Yeah, possible. I think so. Extreme elements within Pakistan PTI workers should join hands with Sindhu Desh and Baluch fighters to give tough time to Pakistan army. Pak army will get busy within Pakistan. Extreme elements within PTI hate India. Okay, so be careful. Godslayer Tantia, Pakistan army to get Punjab province in order to then they will squeeze hold on other. Yeah, that's what they're trying. Aaj ke din. I go with you. John Doe says, "Oh, I just noticed, sir, the former ISI head is in charge during Balakot. Asif Ghafoor opposes Munir. Good. Yeah, right. So, point of view is Imran is only 10% popular. What is Zulfikar Bhutto? IK has digital support mainly from dual citizens residing outside. The ground reality is different. So, do I think tech made different? Look, we can't compare both. Let me tell you, Imran Khan, from what little I've seen, is far more popular than Bhutto. Remember, Imran Khan has got charisma. He won the World Cup for Pakistan against all odds. And if you see his jalsas and hear his jalsas, जहाँ वो बात करता रहता है, ये बात दोहराता रहता है और जब भी ये बात बोलता है, वहाँ लोग चिल्लाते हैं. और किसी जलसे में, किसी इसके मीटिंग में ऐसे मीटिंग मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा क्योंकि वहाँ लोग भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और गाना वाना चलता रहता है. वो एक्चुअल जलसा है. तो कुछ फर्क है जो जो ये कर रहा है. एक चीज है इसका, इसने पाकिस्तान का नस पकड़ लिया. नस पकड़ लिया. इसको देना पड़ेगा, दाग देना पड़ेगा. इफ इमरान खान इज रिलीज व्हाट नेक्स्ट, देखते हैं कल क्या होगा. विल इस्लामिक रेडिकल पीपल एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ उसका चॉइस क्या है. एनी केस ये पाकिस्तान, ये इमरान खान तो हाफ रेडिकलाइज्ड है. ये क्या इसका नाम था ना, क्या, तालिबान खान. आप वो थंबनेल देखिए जो मैंने किया था संजय कुलकर्णी के साथ, सॉरी अपना जयपुर डायलॉग्स के इनके साथ, संजय दीक्षित जी के साथ. आप उसका थंबनेल देखिए, वो देखिए उसमें वो टेररिस्ट कौन, उसका दोस्त तालिबान खान, राइट. हाउ वुड यूएसए बी लुकिंग एट द सिचुएशन. यूएसए अभी वेट एंड वॉच कर रहा है आराम से. वो मूव करेगा अभी जब टाइम आएगा. उसके हाथ में चाबी है आईएमएफ का. पाकिस्तान स्क्रिप्ट is very complex and it's playing out. Do you foresee any incredible twist from here? I agree with you, Vishwanath. आज सुशांत शरीन has put out a tweet. He says, भाई ये एक बॉल बाय बॉल गेम है, ट्वेंटी टाइप है. ये हर वक्त कुछ न कुछ मोड नया लेता है और it's totally unpredictable. To words to the effect he has said.
ये T20 भी स्लो है जिस तरीके से पाकिस्तान चलता है इन चीजों में। तो पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए आपको ना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो, एब्जॉर्ब करो, सोचो, और जब तक आप सोचोगे दूसरा एक्शन हो जाएगा, उसके बारे में सोचो, और तीन चार जब एक्शन हो जाएगा एक पैटर्न निकल के आएगा, उस पैटर्न के ऊपर एक्शन करना पड़ेगा हमें। रिमेंबर दैट। What is Iran's take on ongoing situation in case of humanitarian issue? Both Iraq and Iran can, sorry, India and Iran can get affected. Yes, I agree with you. Iran is playing a waiting game at this point of time with Pakistan. It has its problems with Pakistan, but पाकिस्तान को चाहता भी है और चाइना भी है बीच में। और जो भी प्रॉब्लम, देखिए हमारे साथ जो बॉर्डर है वो फेंस्ड है, उनके साथ बॉर्डर फेंस्ड नहीं है। सीस्तान बालूचिस्तान जो ईरान का नेबरिंग प्रोविंस है, उसमें भी टेररिज्म चलता है, और राइट, यहाँ के टेररिस्ट वहां चले जाते हैं, वहां के टेररिस्ट यहाँ आ जाते हैं, तो स्पिल ओवर होगा। सो ईरान इज प्लेइंग अ वेटिंग गेम। रोहित कल्लाकुरी, थैंक यू। With army busy in Punjab, will BLA become more active? Yes, ये तो उसमें दो राय नहीं है। अभी तक मैं वेट कर रहा हूं कि टीटीपी और बीएलए का कब ये मौके का फायदा उठाएंगे। उन्होंने अभी तक मूव नहीं किया, करेंगे ये, इसमें डाउट नहीं है। राइट, as you stated that China will take a part of their land. Can they manage to control such holdings given the new paradigm and the violence as seen on the street? Very difficult. I agree with you. They can take land जब इस थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए। इस अनस्टेबल इसमें होगा नहीं। आप वैसे भी देख रहे हो कि चाइना इसको मार रहे हैं। वो safety of Chinese people is a problem for which people are talking. So they will not be in a hurry. The Chinese will not come here in a hurry. Don't be this thing, right? Okay. So Pak instability is bigger headache for China. I agree with you, Vamshi, completely. They keep OAC at bay on Xinjiang. Do you foresee radicals making issue for China in this environment? Yes, I foresee it. Possible. Let us see how it goes. Why instability is far too much. This is not only through Gilgit-Baltistan. It can go the instability. It can go through Afghanistan, and all the projects, CPC projects, वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ग्वादर, वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है। Don't forget that Gwadar had the Hagdo Tariq, Hagdo Tariq, वो भी प्रॉब्लम है। Vamshi sir, when you say POK, do you include GB also? Yes, I do include POK, GB, but actually अगर आप देखे जाएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। POK and Gilgit Baltistan need to be treated differently. If you don't treat them differently, your approach to them is different, right? And the strategic relevance of Gilgit Baltistan and POK are different. किसी दिन मैं बात करूंगा इसके बारे में, विस्तार में मैप वगैरह के साथ आपको मैं समझाऊंगा। Because a lot of people ask, भाई how do you take over Gilgit Baltistan and POK? There is a method, और वो मेथड के लिए 10-15 साल 20 साल चाहिए हमें, पर शुरुआत होना चाहिए। पर क्या हमने शुरुआत किया? ये एक्चुअली मेरी तरफ से ये राइट मौका है उसको शुरुआत करने के लिए। शुरुआत क्या है? बेबी स्टेप्स, आउटरीच, प्यार, ठीक है ना? उसके मैं बाद में बात करूंगा, अभी नहीं। And Srikant Kandagatla, please do come. You have come for the first time. Sir, my question is, if Pakistan agrees with India like Japan type solution during World War II, can India should take the chance on below conditions, give POK? नहीं, ये सब होगा नहीं, Srikant. Very, it is just not possible. Yeah, all these they'll not do. Let's not ask.
this thing also. Let's not think of it also. Abhay Bhaskar also, Akshay Bhaskar, first time you're coming, I think. Welcome, keep coming. In case Indian government strikes terror camps to avenge the killing of our men recently, this is what they want you to do, and this is what you should not do. Okay? The moment you do that, Pakistan will unite against India, army will come back on top, Imran Khan will go back somewhere, Imran Khan also will come towards the army. This is precisely what you should not do. Yeah, Srikanth, I said, okay, all this is wishful thinking, won't happen. Business leaders like Ambani and Adani invest. Oh, no, forget it. No Ambani and Adani will go and invest in Pakistan. Anyway, India has to help. Agar Bagal mein, like, all this is wishful thinking. Let's not even think of it. You can live in this dream world, and that's the end of the story. What is the chance of protest dying in the next 30 days? Protest might die if Imran Khan comes out and he says, cool it. Okay, but the political infighting will continue. Let us see how it goes. We don't know. We will see. Sir, Mr. Tilak Deveshar said yesterday 80% of park land is about to go less than 5, which is extremely drought. Our focus should be on more like these to analyze and for any. Yeah, I agree with you on this. He's right. Group Captain MJ Augustine has shared a tweet wherein Pakistan Army Jawans are with IR, bottom level, highly radicalized. Next 2 days will unravel. I agree. Let us see. We'll see what we have. Yeah, I watched entire Pak series and China series since I followed you like-minded people like you. I don't know what to ask, sir. I tried if I could see them. Oh, don't worry. When jab aayega, you can ask. Okay, how is Afghanistan looking at this situation? We'll not know. Afghanistan has its own view. They'll take advantage of the situation, nothing more. Okay, Badrakali, the worst thing is that Chief of Army Staff is a Shia. I agree with you. Your opinion, we'll finish off all the opinions. Why do the TTP and Baloch rebels not receive support from Indian military intelligence? They are using antiquated and outmoded weapons in their battle. Look, why you have to be careful when you do all this, right? TTP wants Sharia, and they're different breed altogether. Why would you go and help them? Be careful when you talk of all this, right? We are not that kind. Okay. Yeah, I'm here. Thank you. Glad you're here. How does the current instability in Pakistan impact their capacity to fund 0.5? I don't think they're thinking about that at this point of time. They are in a different story or way altogether. How do you see the next chapter in this drama unfolding? Well, we'll see what happens tomorrow. No one can predict Pakistan, right? Bharat Kapoor, hats off to your knowledge. It's not knowledge, it's experience. We've dealt with Pakistan throughout my life. And I'm from that generation which has lived through a lot of wars. Right from 62, we've lived through that war. We've lived through all wars. We understand them better. Okay. What is the current status of foreign exchange reserves of Pakistan? Look, I really don't know. Rishi, these small fry, as far as I'm concerned. Situation, don't you think Afghanistan will be quite worried? Afghanistan is very happy at this point of time. Army coup on the way? Kali, no. I just said the worst thing they can do is a coup. Right? I've gone to full lengths. Well, we don't know. Let us see. Right? I think we've finished. Iske saath main khatam karunga. Thanks. I hope you people have enjoyed this format. Right? At least I've enjoyed. I've understood what you people think. And I'm glad you're asking good questions. A lot of the panelists who come here, a lot of people who come here on our show said, look, you get good questions. Just keep it up. Get your friends over. Get people who are thinking over. Right? एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो हिंदी के श्रोता हैं बहुत हैं हमारे पास कभी कभी बोलते रहते हैं कि सर ज़्यादा हिंदी में बात कीजिए कोशिश यही है कि हिंदी में बात करूँ पर कुछ लोग जो हमारे साथ जो जुड़ते हैं
गाना शॉर्ट में, उनको हिंदी उतना अच्छा आता नहीं है, तो वो इंग्लिश में बात करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उस वक्त भी हिंदी में व्याख्या करने के लिए, और क्षमा कीजिए, ये जो जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ उतना ही कोशिश कर आई मीन जितना उतना ही कर पाऊंगा, राइट। पर मेरा, आप अपना दोस्तों को ये भेज दीजिए, उनको बोलिए कि भाई बीच में हिंदी आएगा, ये इसमें मेरे को दो राय नहीं है। और जहाँ लोग और कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हमें ज़्यादा अंग्रेजी चाहिए, तो हमें संतुलन चाहिए, वो ट्राई कर रहा हूँ, राइट। या Bhakti Kulkarni says, sir, this is format is better. Thank you. And he says, this was really fun. Looking forward to more sessions. I agree. English is better. Yes, that's Indian language. India में हम सब English बोलते हैं. Right. With this, thank you. Good evening and Jai Hind. Meet tomorrow. Get your friends also over. I'm going to have Dushan Singh, General Dushan Singh on the channel, and we'll speak with him. Till tomorrow evening. Bye. Good evening and Jai Hind.